So let us start with the concepts in stationary waves. Okay, so this is what we have discussed last time. Now let us see what is stationary waves. Stationary waves are the special category of waves which are not moving waves. मतलब जो हम देखते हैं यहाँ पे कि waves जो है वो हमेशा एक particular direction में propagate होते हैं, बराबर? उनको कहा जाता है progressive waves. ठीक है, उनको progressive means they just start propagating in a fixed direction. They continue to move in a fixed direction. That's why they are called as progressive waves. But the stationary waves are somewhat different in kind. Stationary waves are the waves which do not move at all. Stationary waves मतलब ऐसे waves होते हैं जो move नहीं करते हैं. They remain at rest. That's why they are called as stationary waves. They are confined to a particular medium, to a particular region of medium. मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के साथ ही वो कन्फाइंड होते हैं, इसलिए उनको स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है. उसके कई सारे एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे कि द वेव्स फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. अभी स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स जो फॉर्म होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, वो हमको पता है ऑलरेडी. दे आर द प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ वेव्स, नो डाउट. बट व्हेनेवर द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर स्ट्रिंग हमने दोनों तरफ से अगर स्ट्रेच किया है या रिजिड सपोर्ट्स के बीच में क्लैंप किया है, तो ऐसे दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में स्ट्रेच किए हुए स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस होने वाले जो वेव्स है वो स्टेशनरी वेव्स कहलाते हैं, याद रखो ठीक से. एंड even the second example is the waves formed in a closed pipe or open pipe. Okay, so all these are the examples of stationary waves. Now we'll first of all discuss about the formation and properties of stationary waves. तो इसमें देखो सबसे पहली बात क्या है ना कि formation, how the stationary waves are formed. Basically the stationary waves are formed when the two identical waves traveling in the opposite direction interfere with each other. Okay, remember stationary waves is the waves formed due to superposition of the two identical waves traveling in the opposite direction, exact opposite direction. Okay, so अभी यहाँ पे अगर सपोज एक वेव जो फॉर्म हो रहा है वो है सपोज y1, जिसको हम इक्वेशन लिख सकते हैं a sin ओमेगा t माइनस kx या प्लस kx. अभी यहाँ पे जब हम प्लस kx लिखते हैं तो दैट मीन्स इट इज द इक्वेशन ऑफ दिस वेव. ओके, इस वेव का वो इक्वेशन है जो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. ओके, एंड y2 is going to be the equation of another wave which is traveling in the positive direction of x-axis, whose equation will be actually given by a sin omega t minus kx. Correct है? And here if we just have these two equations open according to the formula for sin a plus b. Okay, तो sin a plus b फॉर्मूला से अगर हम इसको ओपन करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, देखो sin a sin ओमेगा t into cos kx plus a cos omega t into sin kx, बराबर. ठीक है, and in the same way here this equation can also be opened or expanded according to the sin a minus b formula. sin a minus b का क्या फॉर्मूला है, सेम है, सिर्फ यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ जाएगा. इधर जो प्लस साइन दिख रहा है कि नहीं, उसके बदले यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. तो इससे हमको ये मिलेगा a sin ओमेगा t into cos kx minus a cos omega t into sin kx. Yes, and then if we just add these two equations then we can get this y1 plus y2, so we can call it as y. So y is going to be actually equal to y1 plus y2. तो y1 plus y2 निकालने के लिए क्या करना है, हमको इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड करना है. तो जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरा टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये जो टर्म है वो डबल हो जाएगा. करेक्ट है? तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि y1 plus y2 here will actually be
simply 2 times of. So it will be 2a sin omega t into cos kx. Yes, this is the equation of stationary waves. You have to remember this correctly. And here if we just consider this 2a into cos kx as a amplitude of the stationary waves, ये पूरा जो ब्रैकेट है ये एम्पलीट्यूड के जैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे साइड में साइन ओमेगा टी एज इट इज रखा हुआ है। तो इसलिए ये पूरा जो 2a cos kx है उसको अगर हम सपोज a से रिप्लेस कर देते हैं, because it is going to be the amplitude, so this will become a, and here it will be sin omega t, which represents the equation of stationary wave, remember. But here the amplitude of this stationary wave is variable. It varies with x here, unlike in case of the bits, the amplitude was depending upon the time t here. याद है बिट्स का जो हमने एक्सप्रेशन देखा था, अगर आपको चाहिए तो इमीडिएट फिर से दिखा सकता हूं आराम से। ये देखो, yes, here we can see clearly that in case of the wave beats के केस में हमने जब देखा था, तो जब स्टेशनरी ये बीट्स का जब इक्वेशन फॉर्म किया था, मतलब दो वेव्स जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं, तो वो दोनों वेव्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उस केस में ये रिजल्टेंट इक्वेशन हमको मिलता है। इस रिजल्टेंट इक्वेशन के अंदर ये जो पूरा चक होता है, इसको हमने एम्पलीट्यूड बोला था, और ये एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो अगर देखते हो ठीक से तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी वेव्स एंड बीट्स। इन केस ऑफ द बीट्स, द एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन टाइम. Okay, amplitude varies with respect to time. That means there is a time instant when the amplitude will become maximum, and there is a time instant when the amplitude will become minimum. So the amplitude varies in accordance with the time. But in case of the stationary waves here, if you see carefully, then amplitude contains x as a variable, and hence we can say that the amplitude is given by the formula 2a cos kx, where k can be written as 2 pi by lambda also, or just keep it as it is kx, and hence we can say that this amplitude depends on x sinusoidally, and that's why there is in a space, or there is a point in the space where the amplitude can be maximum, and there is a point in the space where amplitude will be minimum, and that's why the amplitude of the stationary waves is found to vary according to the displacement. तो अगर समझो ये origin है और ये x एक्सिस है, और इसके अंदर अगर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हुआ है x एक्सिस पे, तो at if we put x equal to 0 here, then we can get this cos 0 as 1, and hence we can get an antinode here. तो यहाँ पे हमको एंटीनोड मिलने वाला है इस तरह से। तो एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम हियर एट द इनिशियल पॉइंट, देन द एम्पलीट्यूड विल गो ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो कम 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 होता जाएगा, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा, एंड देन अगेन द एम्पलीट्यूड विल गो ऑन इंक्रीजिंग as we move away from this origin, and it becomes maximum at this particular point, and this particular point is called as antinode, remember. And again the amplitude goes on decreasing because it is the cosine curve, right? So cosine के नेचर के हिसाब से ये एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा where the amplitude becomes 0, we can call it as a node, इसको node बोलते हैं. Again the amplitude will go on increasing and decreasing alternately like this. So every time the amplitude decreases will be called as node. So here we can see clearly that the nodes and antinodes are actually alternately placed in this way. तो ये जो antinodes और nodes जो है वो इस तरह से alternately produce होते हैं और alternately हमको दिखते हैं। यहाँ पे एक बात हम और समझ सकते हैं कि there is a distance, fixed distance between two nodes and antinodes also. And it can be proved that the distance between two nodes is actually lambda by 2. Remember this correctly. And the distance between two antinodes also is actually lambda by 2 only. So same distance होता है, but the distance between a node and antinode, समझो ये node है और ये antinode है, adjacent antinode, इन दोनों के बीच में जो distance है वो कितना बनता है ऑटोमेटिक से, it is lambda by 4, remember. So these are the some important features of these stationary waves. One more thing to understand here is that
any particle of any one loop is always in same phase. एक पर्टिकुलर लूप का कोई भी पार्टिकल अगर देखेंगे तो वो सेम फेज में ही हुआ करते हैं, ठीक है, याद रखो ठीक से। द पार्टिकल्स ऑफ अ लूप आर ऑलवेज इन गोइंग टू बी इन सेम फेज, मतलब अगर ये पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है इस तरह से, तो ये दूसरा पार्टिकल भी उसी फेज में होगा, तीसरा पार्टिकल भी उसी फेज में होगा। सारे पार्टिकल्स, एक लूप के सारे जो पार्टिकल्स है वो सेम फेज में रहेंगे। अगर एक पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो ऑल द पार्टिकल्स विल रीच एट देयर हाईएस्ट पॉइंट्स। इफ वन पार्टिकल इज एट a 30-degree phase, then all the particles will be 30 degree phase only. If one particle is at the mean position, all the particles will be there at mean position in this way. If one particle just moves in the opposite direction, in downward direction, then all the particles will start moving in the downward direction at the same time. That means all these particles will have same phase all the time of a loop. एक लूप के सारे पार्टिकल्स सेम फेज में होते हैं। But if we talk about the opposite loops, adjacent loops, then if the any one particle of this loop is moving upwards, then the other particle in the opposite loop will be moving downwards. देखो कोई भी एक पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है इसको हम बोल देंगे सपोज P और इसको बोल देंगे सपोज Q। तो P and Q are opposite phase, in opposite phases. That means there is a phase difference of pi radian between these 2 points P and Q. Even if we have this point R here, ये R पॉइंट है सपोज यहाँ पे, और ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जिसको हम बोल सकते हैं S। तो देखो ठीक से R एंड S इन दोनों के बीच में भी फेज डिफरेंस कितना है, पाई का है। और P और Q इन दोनों के बीच में भी फेज डिफरेंस कितना है, पाई का ही है, नो प्रॉब्लम। दैट मीन्स द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, इवन इसमें एक बात याद रखो ठीक से, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड S, कैन यू टेल मी? ये देखो P एंड S, अगेन इट इज गोइंग टू बी पाई, रिमेंबर, ओके, नो प्रॉब्लम। एंड अगेन R एंड Q के बारे में भी अगर पूछा जाए तो भी R and Q also have the phase difference that is equal to pi. But if we talk about these points P and R, then P and R के बीच में phase difference कितना है? It is going to be 0 degree. Why? Because they are the 2 points of the same loop. Remember. And again, if we talk about this S and Q, then S और Q के बीच में phase difference कितना है? Once again, it is going to be 0, no doubt. So here you can see clearly that the particles of same loop are always of 0 phase, they are in same phase, and the particles of opposite loops are always out of phase. That means they are in opposite phase. There is a phase difference of pi radian between those. Okay, तो ये हर adjacent loop के बारे में लागू होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखो ठीक से। ओके, और फिर ये भी ना कि एक लूप का जो एनर्जी है वो उस लूप के अंदर ही रहता है। The energy just circulates within the loop, doesn't get transferred from one loop to another loop. This is also one of the important property of stationary waves, remember correctly. And also chalo theek hai, so all these are the properties of stationary waves, we have seen it, and this is the equation of stationary waves, remember. And antinodes and nodes, इनका जो लोकेशन है वो भी हम ढूंढ सकते हैं। अगर a को हम प्लस और माइनस 2a के साथ इक्वेट करेंगे तो देखो ये एक a जो है उसको अगर हम पूरे को अगर 2a के साथ इक्वेट करेंगे ना, तो cos ऑफ kx को हमको प्लस और माइनस 1 के साथ इक्वेट करना होगा, जिससे kx का जो वैल्यू है वो हमको क्या मिलेगा। क्योंकि देखो कोई भी एंगल का cos प्लस या माइनस 1 का भी होता है, जब एंगल 0 2 पाई या 0 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई होता है, तो मतलब इन जनरल इट इज गोइंग टू बी n times of pi, करेक्ट है। तो दिस एंगल शुड बी n times of pi, which means that this x, क्योंकि k मतलब क्या होता है ये हमको पता है ऑलरेडी, k का मतलब होता है 2 pi by lambda, right? So if we just substitute this k just by 2 pi by lambda, then we can be able to get the next step as 2 pi into x by lambda is equal to n pi, जिसमें से पाई पाई कैंसिल हो जाता है और हमको बच मिलता क्या है, देखो तो x जो है तो वो हमको ढूंढ के निकालना है। तो अगर लैम्डा को उस तरफ लेके जाएंगे और नीचे 2 लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा n lambda by 2. These are the coordinates where antinode is present.
remember. And for nodes, we will have to equate this cos of kx with 0, remember. And then we can get this kx to be simply odd multiple of pi. That means 2n minus 1 times of pi. And if we just put this k, or we replace this k by 2 pi by lambda as we know it, तो k के बदले डायरेक्ट 2 pi by lambda डाल देंगे, जिससे अभी क्या होगा, देखो पाई विल गेट कैंसल्ड, एंड पाई कैंसिल होने के बाद बचता क्या है, लैम्बडा को उस तरफ लेके जाओ तो x मिलेगा हमको 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाय, हाँ सॉरी पाई बाय 2 आता है इधर, पाई बाय 2, ओके पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होता है कि नहीं, तो इसलिए वो लैम्बडा बाय 4 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। Yes, okay. So the first number which satisfies this condition will be obtained by putting n equal to 1 here, and n के बदले अगर 1 डाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3 लैम्बडा बाय 4 मिलेगा, ठीक है। यस, 1 डालेंगे तो क्या आएगा, पहले 1 लैम्बडा बाय 4 आएगा, तो लैम्बडा बाय 4, देन 3 लैम्बडा बाय 4, देन 5 lambda by 4, and so on up to odd multiples of lambda by 4. This will actually be the locations at which the nodes are formed actually. तो nodes कहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो वो हमको यहाँ पे पता चल रहा है, और एंटी नोड्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं वो यहाँ से पता चल रहा है। We can just expand this and say that this antinode, first antinode will be formed at x equal to 0. Then again lambda by 2 पे दूसरा एंटीनोड मिलेगा, लैम्बडा पे तीसरा एंटीनोड, फिर 3 lambda by 2 पे चौथा एंटीनोड, and so on like that up to infinity. So in this way we can get different number of antinodes in this way here. And then again here okay, अभी इसमें एक बात याद रखो कि यहाँ पे हमने ये जो वेव है, दो वेव्स जो बात कर रहे हैं, जो मिक्स होने जा रहे हैं, उनका इक्वेशन ही हमने साइन के फॉर्म में लिया था, बराबर, ठीक है। बट अगर ऐसा हो जाता है कि दोनों इक्वेशंस जो है वो कॉस के फॉर्म में है, तो उसमें क्या होगा, उस केस में थोड़ा अलग आएगा, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये कॉस के एक्स के बदले क्या आ जाए, साइन के एक्स आ जाए, 2a साइन के एक्स, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। तो जब एम्पलीट्यूड बाउंड्री कंडीशन सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या, द बाउंड्री मतलब एंड पॉइंट वाला है, ये उसमें से हमको पता चल जाएगा, बस बस उतना ही डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन गेट द डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन दिस वे। ओके, अभी हम देखेंगे ठीक से कि व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट। यस, ओके, सो सी हियर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर अभी इसमें 3 टाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको इसमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के बारे में, ओके, स्ट्रिंग जो स्ट्रेच्ड है। दूसरा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओपन पाइप के बारे में, ठीक है, ओपन पाइप, और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे क्लोज्ड पाइप। अभी ये समझ के लो ठीक से कि ओपन पाइप मतलब द पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स, एंड क्लोज्ड पाइप मींस द पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर। एंड स्ट्रिंग, अभी देखो स्ट्रिंग, ओपन पाइप और क्लोज पाइप, इन तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस उनमें बाउंड्री कंडीशन का है। बाउंड्री कंडीशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, सो बाउंड्री कंडीशन मींस, देखो बाउंड्री पे क्या फॉर्म होता है, नोड फॉर्म होता है या एंटी नोड फॉर्म होता है, उसके हिसाब से बाउंड्री कंडीशन डिसाइड होता है। स्ट्रिंग के लिए बाउंड्री कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग के केस में दोनों एंड पॉइंट्स पे नोड होने चाहिए, याद रखो से। ओपन पाइप के केस में बाउंड्री कंडीशन ये है कि दोनों एंड पॉइंट्स पे एंटी नोड होने चाहिए। देखो सपोज ये ओपन पाइप है, दोनों तरफ से ओपन है, तो उसकी वजह से बाउंड्री कंडीशन ऑब्वियसली ये होगा कि एंटीनोड मस्ट बी फॉर्म्ड एट द ओपन एंड्स, नो डाउट। एंड क्लोज पाइप के लिए देखो, क्लोज पाइप के लिए कंडीशन क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन, तो जहां पे क्लोज्ड एंड है, मान लो कि ये यहाँ पे क्लोज्ड एंड है,
Okay, this is the closed end. So there must be an node formed at the closed end point, and there should be antinode on the open end point. Okay, that is the basic difference between all these three. Getting it? See, for string, there should be nodes at the ends. For the open pipe, there should be antinode at the ends. And in the case of the closed pipe, there should be node and antinode at the two different ends. So yeah, that is the basic difference between all these three. So here, according to this boundary condition, we can get different modes of vibrations of this stretched string. तो string के modes of vibration कैसे हमको मिलते हैं? सबसे पहला मोड जो हमको मिलता है वो इस तरह से है, जिसमें दो नोड्स फॉर्म होंगे और बीच में एक एंटीनोड फॉर्म होगा, देखो ठीक से. And whenever such this thing happens, in that case we say that the string is vibrating in this first mode, or it's vibrating with fundamental frequency, and its frequency is actually given by the formula 1/2L root T by M, where T is going to be the tension in this string and M is called as the mass per unit length of this string. Remember, this M is not the mass only, but this M stands for mass per unit length. So if we represent it by mu, it will be better. You will not have any confusion there. नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर m डिनोट करेंगे तो कभी तुमको कंफ्यूजन भी हो सकता है कि वो मास है या मास पर यूनिट लेंथ है. बट अगर म्यू से डिनोट करेंगे उसको, जैसा कि कई सारे टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस बुक्स के अंदर किया है, तो वो इसीलिए किया है कि m stands for mass many times, and that's why we want not to get confused between mass and mass per unit length, and that's why we are representing this mass per unit length as mu. Okay, so this is the formula for fundamental frequency of a string. Remember, this is the fundamental frequency of open pipe. When the pipe vibrates with such a situation in which there will be an antinode formed at the open end and antinode formed at the other open end. दोनों open ends पे क्या होना चाहिए? Antinode form होना चाहिए और बीच में node होना चाहिए. देखो ठीक से, दोनों तरफ antinodes form हो रहे हैं और बीच में exactly center पे node form हो रहा है. So the fundamental frequency of this open pipe is given by the formula V/2L. Remember that this V is nothing but the velocity of sound here in air. Okay, sound का velocity है ये. और जैसा कि हम जानते हैं, velocity of sound in air is given by the formula, that is Laplace formula for Newton's formula for velocity of sound in air, to which Laplace has suggested some correction. Along with that, we already know that the velocity of sound in air is given by the formula root of gamma p upon rho. याद है ये बात? तो अगर ये हम पे डाल देंगे इसको, तो इससे हमको मिलेगा frequency of the open end pipe is given by, again it is 1/2L into root of gamma p upon rho. बट क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो वेलोसिटी साउंड का है एयर के अंदर, वो कांस्टेंट होता है. इट इज रिगार्डेड एज अ कांस्टेंट and it is taken as 330 meter per second in most of the times, and that's why we can choose this velocity of sound as it is and record or remember this formula as a final one. We are not to go into this one unless and until there is a change in pressure or change in density or there is a change in temperature even. So in that case, because ये हमको पता है already कि जो velocity sound का है, तो velocity sound का ये formula के ऊपर depend करता है. और जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इस फॉर्मूला को हम डेंसिटी को, क्योंकि डेंसिटी हमको पता है डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसको यूज करके हम इस फॉर्मूला को मास और वॉल्यूम के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये हमको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड टू बी सिंपली इक्वल टू गैमा इनटू पी वी अपॉन एम. करेक्ट है? यहाँ पे एम मतलब क्या है? मास, which is going to be the constant, and PV is also going to be a constant at constant temperature. So increase and decrease of pressure will not affect anyways to the velocity of sound. But if we just express it in terms of the temperature, then we can just get this as rho into RT upon M naught, where M naught stands for molar mass, which is again constant, but this temperature is already there. So in this case, we can prove that this velocity of sound in air is going to be proportional to the square root of absolute temperature of air. And since if absolute temperature of the air is increased, then velocity will also increase, and because of that velocity increased, this
frequency of open end pipe will also increase. The same thing will happen in case of this closed pipe also. The increase in temperature will increase the velocity frequency of closed pipe, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप. ओके, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वही इस वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और वेलोसिटी जबकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो उसके कारण यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, we can say that the fundamental frequency of open pipe or closed pipe always increases, and there is a relationship between them. The frequency, fundamental frequency of open or closed pipe is directly proportional to the square root of absolute temperature of that air vibrating in that pipe. Remember, okay? तो ये बात याद रखो अच्छी तरह से. चलो ठीक है, उसके बाद हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ये तो हो गया चलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ओपन पाइप, नो डाउट. But in the same way here, fundamental frequency of a closed pipe can also be found out to be simply equal to n is equal to v upon 4l. See the difference here. The L 4l, यहाँ पे नीचे 4 आ रहा है और यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है. That is the basic difference between the fundamental frequency of closed and open pipe. Remember. So these are the fundamental frequencies which are calculated by neglecting the end correction. But if we want to include the end correction also in it, then we can say that end correction के साथ fundamental frequency क्या बनेगा? Open pipe का वो बनेगा V upon 2 times of L plus 2E. Here E stands for end correction, which is actually equal to 0.3 times of diameter of the pipe. And here in case of this closed pipe also, the fundamental frequency can be obtained to be simply equal to 4 V upon 4 times of L plus E. here यहाँ पे E एक ही बार आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन एंड पाइप के अंदर ही एंड करेक्शन हुआ करता है. एंड करेक्शन का कंसेप्ट ऐसा है कि वी थिंक दैट दिस antinode will be formed exactly at the open end, but it is not like that. The antinode is formed slightly above it. तो यहाँ पे एंटीनोड फॉर्म होता है. इधर भी एंटीनोड, जहाँ पे भी एंटीनोड फॉर्म होता है या जहाँ पे भी ओपन एंड होता है, तो वहाँ पे एंटीनोड स्लाइटली बाहर फॉर्म होता है, और वो जो डिस्टेंस जितने बाहर वो फॉर्म होता है ओपन एंड से, उसको हम एंड करेक्शन बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड ऑलवेज बाय E. And since this open pipe have 2 open ends, so we have to add this E twice, and that's why this 2E appears here, and this E is actually happens to be equal to 0.3 times of the diameter of the pipe. And also here also, in this case also, the E will be actually 0.3 times of diameter of the pipe, but in this case only one E will be sufficient, because ये जो क्लोज पाइप होता है उसके अंदर जब वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट होता है, तो उस समय एक ही एंटीनोड और एक ही नोड हमको मिलता है, और एंटीनोड थोड़ा बाहर अगर फॉर्म होगा तो उसमें ये ओपन एंड और एक्चुअल एंटीनोड इन दोनों के बीच में जो है E इतना डिस्टेंस रहेगा, and that E distance have to be added up with the length of this pipe here so as to make it correct. That is called as the end correction, and that's why this will be the formula for fundamental frequency of closed pipe when end correction is considered, and this will be the formula for fundamental frequency of a closed pipe when end correction is not considered. Remember. And also here this open pipe का भी fundamental frequency अगर end correction नहीं consider करना है तो ये होगा, लेकिन अगर हमको end correction consider करना है तो फिर ये formula हमको use करना पड़ेगा. Anyways, in both of these cases, the fundamental frequency can be found out either by using this or this formula, no doubt. But here in case of this string and open pipe, what happens is all the harmonics are present in the vibrations. That means the string can vibrate with the all the harmonics. That means N1, we can say it will be N itself, N2 will be 2 times of N, N3 will be 3 times of N, and all these harmonics will be present in the vibrations of pipes, in the vibrations of this string here. तो ये string के बारे में हम देख सकते हैं कि all harmonics are present, no doubt. Open end के pipe में भी हम देख सकते हैं कि first harmonic with which the pipe can vibrate with it will be the fundamental frequency itself, but the second harmonic with which it can vibrate is going to be 2 times of fundamental frequency, that is 2n here. The third harmonic with which it can vibrate is 3 times of the fundamental frequency, and so on like that. So कोई भी harmonic के साथ ये fundamental ये जो open pipe है वो vibrate हो सकता है, बिल्कुल, no doubt. लेकिन
क्लोज पाइप के बारे में ऐसा नहीं होता है. क्लोज पाइप के बारे में ऐसा होता है कि the fundamental frequency or the first harmonic with which it can vibrate with is the fundamental frequency itself, no doubt. But the second harmonic with which it can vibrate is third one. So ये second N2 जो है, it is going to be absent here. Okay, N3 is going to be 3 times of N, and this is present here. Okay, the pipe closed at one end can definitely vibrate with this third multiple of fundamental frequency, no doubt. But again, it cannot vibrate with the fourth harmonic. That means fourth multiple of fundamental frequency. It is not present at all. And again, this N5, that means the fifth harmonic will again be present in the vibrations of pipe closed at one end. And again, sixth one will be absent, and so on like that. So every even harmonic is going to be absent, and odd harmonic is going to be present. See here. So that's why we can, this happens in case of the closed pipe only. तो क्लोज पाइप के बारे में ही ऐसा होता है, और उसका बेसिक रीजन क्या है, ये बाउंड्री कंडीशन ही है. बाउंड्री कंडीशन जो अनसिमेट्रिक है उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा होता है, जबकि बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे ओपन पाइप के बारे में देखो सिमेट्रिक है. इवन स्ट्रिंग के बारे में भी बाउंड्री कंडीशन सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक इन द सेंस दोनों तरफ या तो नोड्स होंगे या तो एंटी नोड्स होंगे, इसलिए उसको बोलते हैं सिमेट्रिक. बट क्लोज पाइप के बारे में बाउंड्री कंडीशन अनसिमेट्रिक होने की वजह से उसके अंदर इवन हार्मोनिक्स गायब हो जाते हैं और ऑड हार्मोनिक्स सिर्फ रहते हैं. अभी इसमें जो रहते हैं उनको हम ओवरटोन बोलते हैं. उसमें से भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एक्सक्लूड करके, तो देखो यहाँ पे जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एक्सक्लूड करना है, तो उसकी वजह से यहाँ पे N2 equal to 2N. This will be actually called as the first overtone. Remember, first overtone कौन है इसमें? In case of the string, the first overtone will be N2 here, second overtone, third overtone, and so on like that. Even in the same way, in case of this open pipe also, the first overtone, second overtone, third overtone will be the N2, N3, and N4 respectively. But in case of this closed pipe only here, the first overtone will be equal to N2, N3 here, and the second overtone will be directly N5, and third overtone similarly will be N7, which will actually be seventh multiple of the fundamental frequency, and so on accordingly. So here we can see this will be called as the first overtone. Remember, even in case of pipe also, this will be called as the second overtone, and even similarly in case of open pipe also, this will be called as the second overtone. Here it is also called as the third overtone. Okay, but in case of open pipe also, it is the third overtone only. But in case of closed pipe here, this will be actually called as first overtone. समझा क्या ठीक से? First overtone इसको बोलना होगा, इसको हमको बोलना होगा second overtone actually. किसका? क्लोज पाइप का. ओके, याद रखो ठीक से. क्लोज पाइप का सेकंड ओवरटोन मतलब N5, क्लोज पाइप का फर्स्ट ओवरटोन मतलब N3. yes, remember, and that's why we have the formula for overtones. तो overtones के लिए फॉर्मूला क्या है देखो. if you want to find out the pth overtone for the string or pipe, open pipe, okay, ये string या open pipe के लिए अगर हमको overtone ढूंढना है तो pth overtone के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो pth overtone will be equal to NP. Simply that means P times of the fundamental frequency N. Correct? And N can be either this or maybe this or maybe this, depending upon whether it is a string or it is a open pipe, no doubt. So pth overtone, pth overtone will be actually P plus 1 times N. Okay, pth overtone means N P plus 1, means it is going to be the P plus 1 the harmonic. Okay, P plus 1 the harmonic, या तो ठीक से. तो ये दोनों केस में, स्ट्रिंग के केस में भी और ओपन पाइप के केस में भी, ठीक है. लेकिन इस केस में क्लोज पाइप के केस में क्या होता है? pth overtone will be actually equal to 2p plus 1 harmonic, मतलब 2p plus 1 times of fundamental frequency. Remember this formula here correctly. And here N
can be replaced by either this or this, depending upon whether n correction is given or not accordingly. And here also, here this n can be replaced by either this or this, depending upon whether the n correction is given or not, in this way. So this is all about the, in general, fundamental frequency, overtone, and harmonics. Okay, remember this correctly. Now we'll talk about some important aspects of the string. Okay, string के बारे में हम ये देख सकते हैं आराम से कि string का जो frequency है, fundamental frequency, it is given by 1/12 root t by m, right? So this is, और mu, चलो mu उसको डिनोट कर सकते हैं. यहाँ पे होता क्या है ना कि ये सपोज स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है, तो वो लेंथ हम यहाँ पे स्मॉल एल एज्यूम करते हैं, और उसका जो टेंशन, इसके ऊपर जो टेंशन हमने एडजस्ट अटैच किया है, सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ हम ये एक पैन अटैच करते हैं, और इस पैन के अंदर कुछ वेट अगर ऐड करते हैं, तो वो वेट जितने भी फोर्स के साथ इसको खींचेगा, स्ट्रिंग को खींचेगा, दैट स्ट्रेचिंग फोर्स F will be actually equal to mg, and that is actually called as the tension in the string. So देखो, तीन चीजें यहाँ पे समझने जैसी, कि स्ट्रिंग को चाहे कैसे भी रखो, नो प्रॉब्लम, बट जिस फोर्स से हम इस स्ट्रिंग को खींचते हैं, वो फोर्स यहाँ पे टेंशन बनता है. तो वो फोर्स कभी mg के बराबर भी हो सकता है, बट यहाँ पे m कौन सा यूज करना है हमको, स्ट्रिंग का मास नहीं, इस स्ट्रिंग को खींचने के लिए जो वेट हम लटकाते हैं, उस वेट को हमको टेंशन बोलना होता है. कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फोर्स है, चलो फोर्स तो फोर्स है ना, ठीक है, उसको ये जरूरी नहीं कि वो वेट ही होना चाहिए. कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो फोर्स है, वो फोर्स हम मैन्युअली उसको अप्लाई करें, या कभी ऐसा हो सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट एज अ टेंशन, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई दूसरा कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो वहां पे काम करे एज अ टेंशन. बिल्कुल हो सकता है. तो स्ट्रिंग को खींचने वाला जो भी फोर्स होगा, वो यहाँ पे टेंशन का काम करने वाला है. ये कंसेप्ट है, समझ के लो ठीक से, ठीक है ना. एंड हियर दिस म्यू, हियर म्यू विल बी कॉल्ड एज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड म्यू कैन बी फाउंड आउट बाय जस्ट टेकिंग द रेशियो ऑफ mass of the string here and the length of the string. Remember, तो अभी यहाँ पे देखो mass and length, अगर इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो इससे हमको म्यू मिलेगा. तो यहाँ पे म्यू निकालने के लिए याद रखो ठीक से, we'll have to use the mass and length of the string only. इस मास का उसके लिए कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, याद रखो ठीक से, ठीक है. तो mass of the string and length of the string has to be taken the ratio of, so as to get the मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ ढूंढने के लिए हमको क्या करना होगा, ये मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज करना होगा. हो सकता है कि यहाँ पे अगर स्ट्रिंग का मास दिया हुआ हो और स्ट्रिंग का लेंथ भी दिया हुआ हो, ठीक है, तो उस केस में हम दोनों का रेशियो लेके म्यू निकाल सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम. लेकिन कभी कभी स्ट्रिंग का डेंसिटी दिया जाता है, तो उस केस में हमको इस फॉर्मूला को डेंसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आना चाहिए. तो mass of the string can be actually expressed as the volume of the string multiplied by density, and that is divided by length of the string. Okay, and volume, we already know that it is going to be area into length. Area of cross section into length is called as a volume, into density as it is, that is divided by length. So we can just get this length cancelled, and the mass per unit length of the string can be expressed as area of the cross section of the string multiplied by density of the string. Okay, or we can also express it in terms of the radius of the string, because area we know that it is always equal to pi r square. So we can express this mu is equal to pi r square into rho here. So this is the expression for mass per unit length of the string. And if you put this value here in this formula, then we can get another formula for the frequency of vibration of the string to be simply equal to 1/2L into root t by rho. Sorry, 2t by mu, where mu is nothing but pi r square into rho. Remember, and even we can just simplify this still further, so as to get this as
So n will be actually equal to 1 upon 2l, and since we know that this square root of this r square will actually be r, and hence we can just get this as root of t by pi rho, remember. And this is the another formula for fundamental frequency of the string. From this formula only we can get that fundamental frequency is inversely proportional to the length of the string, or we can say that NL is going to be equal to constant, remember. And also that this n is radically proportional to square root of tension, and n is inversely proportional to square root of mass per unit length. And one more thing is that n is inversely proportional to the radius of the string, and n is inversely proportional to the square root of density also. तो ये जो लॉज है ये याद रख लो ठीक से, इनके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने स्टेशनरी वेव्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखे, तो कल के लेक्चर में हम इसको ही और ज्यादा डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। ओके, so that's all from my side for today's lecture. Thank you all of you.